अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ यू वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर, you like question x square and inversely as the product of yz cube and inversely as yz cube, so we get u is equal to kx square over yz cube, equation 1. And we are given with u is equal to 2, x is equal to 8, y is equal to 7 and z is equal to 2। पुट करेंगे ये सब वैल्यूज इस इक्वेशन में एंड हम यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी विच इज 7/4। इसको के की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। सो वी गेट u इज इक्वल टू 7/4 x square, 7x square over 4y z cube, which is equation 2. Now we have to find the value of u. U is equal to question mark when x is equal to 6, y is equal to 3 and z is equal to 2. What will we do? We put values of all these x, y and z in equation 2. We get u is equal to 7/4 into 6 square over 3 2 cube. We get u is equal to 21/8. So क्वेश्चन नंबर 4 उसके बाद कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।